Good morning. All right, so we have started with the test classes and we will be creating a test class for trigger yesterday. So time was over, so I left that discussion in between. Let me continue from the same point. So I'll be going to the developer console and I would be opening all. So, so there is a trigger called, oh, why I'm creating new. There is a trigger called account trigger. And for this trigger, we wanted to write down a test class. This is a logic-less trigger because we already have created an handler class for this trigger. And so this is that handler class. Now, we were working on this one, right? All right. So I have told you, like, we first of all would require to make an assumption that we have not written this trigger and we wanted to write down the business logic, the test class for this. So if you wanted to write down a test class for a certain kind of code which actually you have not written, you first of all would require to understand what the business logic is doing. All right. If you would understand by looking into the code, that's a good thing. But if you won't understand that, you can definitely take the help of ChatGPT, most promising, otherwise the Google as well, right? Let's say if I would copy this code, if I would copy this code, for example, right, if I would copy this code and I'll ask this to the ChatGPT that whether what this code is actually doing, what this code is actually doing. Let's suppose if you don't understand a certain business logic, but you wanted to understand, you can definitely take the help of ChatGPT over here and you can just copy and paste the code out there and you can ask what this trigger is doing. So I just copy this and I'll paste it out over here. Explain this code to me. Something like that. Explain this code to me. So it would start evaluating that code and then see it would give its conclusion. What are the statements that are being used and what is the purpose of those, right? So this is also one of the way where you could ask the chat GPT or some external source to make you understand about what the code is actually doing, right? So now you can see this code basically is about making certain fields as a mandatory field, right? Making certain fields as a mandatory field, and this particularly is working if you would go to this before insert and before update, right? This method handle before insert and update. From here also we can understand that this method particularly is getting called whenever an account record either is getting inserted or it is getting updated. In both of the cases, this particular method is getting called. That is the first method. Now let's talk about the second method. Now second method is handle before delete. Now if you would see over here, there's another business logic for before delete event. So this method particularly is getting called whenever if you are trying to delete an account record, right? So we have two separate scenarios, one for the insert and update, the second is for before delete. Before insert update is one scenario and the second one is before delete. So accordingly, we have to write down the business logic test. I mean, we have to write down the test cases over here inside the test class. All right. So based on this analysis, what we just have did, there are two methods. One method was for before insert and one method is having before insert and update logic, whereas the second method is having before delete logic. All right. So based on this analysis, I would be creating my test class. So static test method void. Static test method void. Now
I mean, we are having two separate methods over here. So first of all, I'm writing test class, test method. I would be writing test method for this method, right? Handle before insert an update. So handle before insert an update. I'll just, so to make a difference, to make a significant difference, I would add one word over here, test, test. Now see, this method is not just a common method, it's a parameterized method. And you can also see that this method, whenever the method is coming and whenever the method is calling, what it is supplying from here, it is supplying the value of trigger.new. Now, this value of trigger.new is getting collected over inside a list collection. All right. Now, similarly, over here as well, inside your test method, you should define this as a parameterized method and copy and paste the same thing. Copy and paste the same thing, like list of account, and with I mean with certain name you can give, or you can, I mean, this is not required over here. You can make this as a default constructor. You can make this as a default constructor. What you have to importantly do is like use a new keyword. This is very important. Why? Why? See, understand. This method, although is a parameterized method, this method is a parameterized method. And even though if we would not see that it is getting the value of trigger.new, more importantly, from here itself, we can understand this method. If I'm going to write down a test case for this method is accepting a parameter. What type of parameter it is accepting? It is accepting a list collection. It is accepting a list collection. We have defined a collection list of account, and whatever is getting with this name, we are collecting it inside in this collection. When you create a test method, you are creating a test method, particularly for this method, which is a parameterized method, and the parameter itself is a collection. You have to create a collection. You have to create a collection. Now, if you remember one thing, now, for example, we have written so many of the codes. For example, if I am defining a list collection, how usually we define it? How usually we define it? Let's say uh, list of account. Let's say LST account equals to what? You use this new list of account and make it as a default constructor. Do you remember this? This is the way we define a collection. This is the way we define. On the right hand side, whatever you return would create a collection and a lot of memory for that particular collection. Left side is the definition. What we are creating, what is going to be the name of this. What we are creating is a list of account. What is going to be the name of this? With this name, it is going to be referred in this particular program. But on the right hand side, the more importantly, along with the new would actually create, new would actually reserve certain amount of memory for this collection. So we require this part, not the left one. We require this part. So that is the reason, that is the reason. And that is the reason you have to define it like this: list of account with a default constructor. So internally inside in memory, heap memory, it would going to define certain amount of memory for this method, which that come up with a list collection always. That come up with a list collection always. Did I'm making any list of account? What is the errors? Expecting was new. Must have a body to hai yaar. All right, let me try to save this first of all. Sometime it happens with because of your internet speed as well. Sir, I guess trigger की spelling. Semicolon. Trigger की spelling. हाँ ठीक है, उससे नहीं है प्रॉब्लम, उससे नहीं है. Okay, okay. सेमीकोलन आई मीन सेमीकोलन में लिखना भूल गया. तो नहीं. Yes, definitely I'm making a mistake over here. Yes. This has to be done in the next line.
One second, one second, one second. No, this is the corrected code. So yes, I was wrong about this. ये एक point नीचे मुझे लिखना चाहिए था. So while defining the method, I'll have to do it directly. While defining the method, I'll have to do it directly. Whereas अब हम जब आगे बढ़ते हैं, कोड में, तो बॉडी में आते हैं इसके, तब हमें बेसिकली विल हैव टू यूज अ लिस्ट कलेक्शन ओवर दैट. चलो, सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक, let's consider for a while, let's consider that this is a normal method. Let's consider this one is a normal method for a while. Now, how did you call any normal method which is a static? So this we did in the past two programs. Like हमने जो पहले जो दो test classes बनाई है, so we have understood like how we can call any static method inside in the test class. Now I'm going to do the same thing. Actually, I'm going to do the same thing. See, account trigger handler, that is the name of the class, dot account trigger handler, that is the name of the class, dot this method I'm calling. The method called handle before insert and update. Right? This method I am calling. Now, ठीक है. This has to be done. See, ये हमने जो इसके पहले जो सीखा है ना, वो तो आपको हर बार करना है. मतलब whenever you are writing a test class which have different methods inside in that test class. For example, you are writing a test class for this one, and now this class is having two methods. Yeah, handle before insert is one of them. The second one is handle before delete. So if you are writing a test class, you ultimately would require to invoke the methods. That is required. If you would not done that, आपको code coverage नहीं आएगा. तो पहली बात तो ये कि आपको methods को invoke तो करना ही है. If they are the static methods, you can invoke them directly just by writing the name of class dot name of method. If they are a non-static method, you would obviously would require to create the object of this class first of all, and then with the name of the object you'll have to invoke. और ये हमने काफी पहले पढ़ा हुआ है. तो जब then when we started object oriented programming, that time we directly have not branched, we directly have not jumped to the static methods. हमने काफी सारे examples solve किए where the methods were non-static method, and then I'll let you know how to call the non-static methods as well. There's one more step which was involved. For calling any non-static method, you first of all would require to create the object of this class. Now, with reference to that object dot, let's say we create an object called obj1. So obj1 dot handle this. Now, because this one is a static method, you can call it directly. But remember, if you are writing a test class for a particular class, and if it is having, let's say, 3 or 4 or 5 methods, so your test class must invoke all of them. If you would not invoke them, you're not going to get the proper code coverage. So the first thing is to invoke the method. That is the first rule. We did this in the past two programs. We created, so far like we have only created two classes although, but what was common in all two of them? We have invoked the methods inside the test class. That is important. So let's consider this as a step number one. Let's consider this as in step number one, right? Let's move further with this. Now, now I'm calling a method called handle before insert update, which belongs to this class, account trigger handler. But typically this method, now let's have that discussion. This method is a parameterized method which accepts a parameter, and the parameter over here is a list collection. So what I'm going to do would be, the same discussion which I was initiating. I would, I would replace this with like new and then new list of account, and I'll make this as a default constructor. I would make this as a default constructor, right? I would make this as a default constructor. So what is going to be happen would be like, inside in this test class, whenever this method is getting called, that method internally, while invoking this method from the test class, one new list collection would internally be created, right? And this is important. Why? Because this method is a parameterized method and it accepts a list collection. So that's why I have defined it, and it has to be defined
like this only. Chal, let me save up to this. Now, let's go to the business logic. What this method is actually doing. For this, you will have to make a study of this code, right? You would have to. Now, this was up to a general part. I am invoking this method. How to invoke this method? First of all, I would see what kind of method this is. If this is a static or is this a non-static method? I can see this one is a static method. So if it's a static methods can be called directly like this, class name dot method name. But there was one small thing that this method is a parameterized method, and the parameter is a collection, particularly a list collection. See, whenever it's a collection, though it's a list, set, or map, whatever it is, you always have to create it like this. New. Let's consider if it was a set collection, I would write down set of account. If let's say it was a map collection, map of let's say account, comma, ID, comma, account, something like this. But that would be, that has to be created always like this only. New that particular collection and make it as a default constructor. This was all. This was all about invoking the method, which is very step number one. While writing the test class. You would have to invoke the method. I would have to do this for this method as well. If let's say there were some or more methods, I'll have to repeat the same thing for every method. The first rule of writing test class is to invoke the methods. As many number of methods there are, you would have to invoke all of them. Now it's up to you whether you would invoking them inside same test method or you wanted to create separate test method for every one of them. This is something what you can decide accordingly. आई गेस इसके पहले जो हमने दो प्रोग्राम बनाए उसमें हमने एक ही टेस्ट मेथड रखा है एंड वी हैव इन्वोक डिफरेंट मेथड्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो भी था तो वो एक एक फ्लेवर वो है इसका और एक चीज और है जो फिर मैं अभी इसमें सेपरेट टेस्ट मेथड्स कर देता हूँ उसमें तो हमारा हम ये भी समझ लेंगे कि हाँ हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं ठीक है ये भी एक हमको हम सभी को समझ में आ जाएगा चलिए सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप राइट दिस इज द फर्स्ट स्टेप नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मेथड इज एक्चुअली डू बिकॉज उसके आगे अगर आपको बढ़ना है ठीक है सी एट दिस पॉइंट इटसेल्फ अगर आप इस पॉइंट पे भी चाहें तो रन टेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सी हाउ मच कोड कवरेज यू आर गेटिंग विद दिस राइट आपने टेस्ट रन कर लिया लेट्स गो टू द टेस्ट टैब एंड अकाउंट ट्रिगर और ट्रिगर हैंडलर इन सबका चल रहा है तो आई कैन सी इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ अकाउंट ट्रिगर तो अभी तक कवर नहीं हुआ है ट्रिगर कवर नहीं हुआ है हालांकि ट्रिगर हैंडलर जो क्लास है ना वो 9% कवर हो चुकी है तो 9% आपकी कवर हो चुकी है अब तक ये वाला पार्ट जो है आपका ये ब्लू है मतलब इतना तो इन्वोक हो गया लेकिन इसके बाद का ये पूरा बिजनेस लॉजिक ये तो हमने बाकी तो हमने कवर किया ही नहीं है इसलिए वो रेड है ऑब्वियसली लेकिन हाँ इसके बाद का बिजनेस लॉजिक आपका कवर नहीं हुआ है ठीक है इसलिए फॉर दिस आपको इसके बाद का जो कोड है आपका वो आपका डिपेंड करता है पूरे बिजनेस लॉजिक के ऊपर ठीक है दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस लॉजिक तो अब हमें इसको समझना है तो हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है व्हाट दिस कोड इज एक्चुअली डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर द कलेक्शन द मतलब द कलेक्शंस में जो वैल्यूज हैं उसको ये इन्वोक कर रहा है उसको ये इटरेट कर रहा है and it is iterating every value one by one as you can see by the for loop and then it is checking for industry facts website and everything and accordingly if there is the value it's okay if there is not the values for this field it's making it is prompting certain errors right onto the field level now see this particular thing is working on either inserting a new record or updating isn't it you would have to replicate the same thing matlab this business logic would getting invoked if someone is either trying to insert a new record if someone is trying to insert a new record that record must have the value of industry as well as facts as well as website if it is containing the values of those fields it would allow otherwise it would prompting the errors right it would prompting the errors and this is happening while insertion of a new record this is also happening while
updating the existing record. If you are updating an existing record, and that time if you haven't supplied the value for all these three fields, it would going to prompt you the error. Now this is what we have understood with this code. So we have to replicate the same operation over here, because the trigger ultimately would get called if you would try to insert or try to update or try to delete. This trigger would invoke, if I would ask you one thing, a very simple question, by looking into this trigger, tell me when this trigger would called, tell me when this trigger would invoke, tell me when this trigger would execute it. What is going to be your answer in that case? This trigger is invoked, is automatically invoked if someone is trying to insert a record before insert, or if someone is trying to update a record before update, and if someone is trying to delete a record before delete. Now, let's come to the base of this. Let's come to the bottom of this. Whenever you are trying to insert or update or delete, inside in Apex programming, how you can insert, how you can update, how you can delete a record, there is something called as DML, isn't it? देखो एक एक चेन है पूरी, हाँ उसको समझते चल, एक एक चेन है. इफ माय क्वेश्चन इज लाइक ये ट्रिगर कब कॉल होगा, तो आप बोलेंगे हाँ भाई ये ट्रिगर तो हमारा तब कॉल होगा जब भाई कोई कोई भाई साहब जब इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं. अच्छा, ठीक है. तो इंसर्शन से पहले, अपडेशन से पहले, बिफोर है, और डिलीशन से पहले ये ट्रिगर कॉल हो जाएगा, अपने आप कॉल होगा, इसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ट्रिगर इज दैट कोड which is always executed automatically based on whether it's a before and after. अच्छा, अब आपने कहा इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट के पहले ये कॉल होगा, तो ये कैसे होता है, लाइक हाउ वी इंसर्ट अ रिकॉर्ड, हाउ वी अपडेट अ रिकॉर्ड, हाउ वी डिलीट, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज डीएमएल फॉर दिस. जब तक आप डीएमएल एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, जैसे डीएमएल है, इंसर्ट नाम का एक स्टेटमेंट है, अपडेट नाम का स्टेटमेंट है, मर्ज नाम का स्टेटमेंट है, अपसर्ट नाम का स्टेटमेंट है, डिलीट नाम का स्टेटमेंट है. यहाँ पे तीन ही ऑपरेशन है, इंसर्ट अपडेट डिलीट. जब तक आप जब तक आप डेटा इंसर्ट नहीं करो, या डेटा अपडेट नहीं करो, या डेटा डिलीट नहीं करो, ट्रिगर कैसे कॉल होगा, ट्रिगर कैसे कॉल होगा, है ना? तो ये सब ऐसी कैसे है, दिस सी दिस ऑल आर द स्कैटर्ड पॉइंट, वी जस्ट हैव टू कनेक्ट ऑल ऑफ them. And once we establish a connection, once we establish, once we establish all these scattered node, we would obviously going to understand, अच्छा इसकी dependencies पर है और इसकी dependencies पर है. This is the way, this way you'll have to join this all scattered nodes. Now see, so what I'm going to do, मुझे insertion करना है या update. So इस logic के लिए before insert update के लिए या तो मैं insert कर लूँ या update कर लूँ. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक मैं अगर करूंगा तो ये हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये या तो इंसर्ट पे काम करता है या फिर अपडेट पे काम करता है. अब दोनों में से कोई भी एक करो. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इंसर्ट करने के लिए मेरे पास डेटा तो होना चाहिए, है ना? तो मैं यहाँ पर एक टेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा और उसको इंसर्ट करूंगा. ठीक है, लेट्स से अकाउंट ACC इक्वल्स टू न्यू अकाउंट. अब रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट में, ये हो चुका है. सो आई डोंट थिंक कि ये तुमको बताने की जरूरत है. acc.name equals to test, and then acc dot let's say phone equals to acc dot phone equals to any value, could be something like this, and then acc dot next is industry, acc dot industry is banking. What are the values, कौन कौन सी values होनी चाहिए? acc dot industry and facts and website.
वी मस्ट नॉट सप्लाई द वैल्यू, हम इसकी वैल्यू सप्लाई नहीं करते हैं। जब हम सप्लाई नहीं करेंगे तभी ये वाला पार्ट इन्वोक होगा। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा डाउट है मेरे को इसके ऊपर। हाँ, द नेक्स्ट इज ACC dot facts. I would be not supplying any value, and then ACC dot website. I would be not supplying any value for this. And so we just have created a record over here, and now I would be trying to insert that record. I would be trying to insert that record. What? ACC. And we're trying to insert that record. So what is going to be happen when you insert? See, this is a test record. हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा। I have told you whenever you define something as @is test, so that code is not counted inside governor limit. Here, if you even is creating a record and you are trying to insert that, आप DML use कर रहे हो, आप DML use कर रहे हो, but this everything happens virtually. This everything would happens virtually. ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें virtually होगी। मतलब this commitment of record is actually not going to be, not going to be happen in database physically. This record, ऐसा कोई भी रिकॉर्ड फिजिकली अटेम्प्ट नहीं होता है। मतलब दिस रिकॉर्ड इज नॉट गोइंग टू बी गेट स्टोर्ड इनसाइड द ऑब्जेक्ट। आप ये रन करने के बाद इफ यू ट्राई टू गो टू द ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट दिस रिकॉर्ड, आपको नहीं मिलेगा। दिस एवरीथिंग हैपेंस वर्चुअली। ये सारा वर्चुअली टेस्ट होता है, एंड दिस गेट ऑल टेस्टेड इनसाइड हीप मेमोरी। ये पूरा हीप मेमोरी में होता है। So even though if you are running this insert statement, don't think like, this data is actually going to be get committed inside in database. It's not going to be happen. All right, चलो। But हाँ, at least insertion try करने से क्या होगा, आपको trigger call हो जाएगा। ट्रिगर कॉल होगा तो बिफोर इंसर्ट वाला इवेंट कॉल होगा, उसके लिए ये मेथड कॉल हो जाएगी। ये मेथड जब कॉल होगी, उसको ट्रिगर डॉट न्यू की वैल्यू चाहिए, है ना। दैट एवरीथिंग वुड बी सिमुलेटेड, ये पूरा कोड सिमुलेट होगा। ठीक है, तो आई वुड बी सेविंग दिस एंड लेट मी ट्राई टू रन दिस। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एलसी फॉर इफ का थोड़ा सा लोचा लग रहा है। लेट मी रन दिस कोड, विल गोइंग टू सी कि सारी लाइंस हमारी चेक हुई कि नहीं। सो अकाउंट अकाउंट ट्रिगर तो आपका कॉल हो गया, 75% पे कॉल हो गया है। बिफोर डिलीट इवेंट कॉल नहीं हुआ है। ट्रिगर हैंडलर इज 45%। यस, ये कॉल हो गया आपका, वेरी गुड। अभी ये नहीं हुआ है तो चलता है, इतना तो अपन कर लेंगे। मेन थिंग था ये कॉल, ये हो गया कॉल। और ट्रिगर अगर अपन देखें कि ट्रिगर किस हद तक कवर्ड हुआ है, तो आप ट्रिगर पे क्लिक कर लो। ट्रिगर वैसे भी 1% भी अगर, सुनो, ट्रिगर अगर 1% भी कवर्ड हो गया तो आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। हालांकि वो 75% हो चुका है, लेकिन अभी अभी फिर भी हम ये लाइन करेंगे, हम इसको इसके लिए कोड लिखेंगे, तो हम इसको 100% पे लेके आएंगे। हालांकि अभी भी डिप्लॉय हो सकता है ये, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इतना पोर्शन हमारा कवर हो चुका है, अब इसका बचा हुआ। अब देखो, इसमें एक चीज समझो, इफ यू वुड सप्लाई द वैल्यू ऑफ इंडस्ट्री। अब एक बात मैं और बताता हूँ, ठीक है। ट्राई टू थिंक लाइक दिस, अगर आप इसका और वेबसाइट का वैल्यू, लेट्स से अगर आप ये सप्लाई करते, अगर आप ये सप्लाई, आपको यहाँ पे कंडीशन क्या है कि फैक्स की वैल्यू नहीं होगी तो ये पोर्शन कॉल होगा, इंडस्ट्री की वैल्यू नहीं होगी तो ये पोर्शन कॉल होगा, वेबसाइट की वैल्यू नहीं होगी तो ये कॉल। जबकि आप टेस्ट केस ऐसी बना रहे हो जिसमें आपने वैल्यूज दे रखा है। ठीक है, अब आप इसको रन टेस्ट करो और सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस समझो। आपको बीइंग अ डेवलपर खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती क्या हो रही है। ठीक है, बीइंग अ डेवलपर आपको खुद समझ में आ जाएगा आपकी गलती क्या हो रही है। देखो, क्या गलती हो रही है आपकी। इफ स्टेटमेंट तो कॉल हो रही है, वो चेक भी कर रहा है कि भाई क्या इंडस्ट्री का वैल्यू नहीं है या फिर नल है, क्या फैक्स का वैल्यू नहीं है या फिर नल है, एम्प्टी या फिर नल, एम्प्टी और नल। लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, उसमें तो वैल्यू दी गई है। वैल्यू दी गई है तो ये स्टेटमेंट कॉल नहीं होगा, बिकॉज ये तो तभी एरर पुटअप कर रहा है जब आप उसकी वैल्यू नहीं दे रहे हो। इसलिए टेस्ट केसेस जब आप बनाते हो, तो टेस्ट केस अकॉर्डिंग टू व्हाट लॉजिक इज, व्हाट लॉजिक इज ओवर देयर इनसाइड ईफ स्टेटमेंट, उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। तो अगर मैं इसकी वैल्यूज दूंगा तो वो पर्टिकुलर ईफ के बाद वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, वो कवर नहीं होगी। ठीक है, इसलिए टू कवर दिस लाइन एज, आपको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ एल्स वाला पार्ट होता, जैसे इसके पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैंने जिसमें एल्स भी था,
इसमें एल्स भी था, है ना, यू रिमेम्बर दैट प्रोग्राम, इसके पहले मैंने लिया था, उसमें मैंने एल्स को भी कवर करके दिया था। हाँ, असर्ट इक्वल्स में जब हम देख रहे थे तो हमने जब इस लाइन को कवर किया था, ई फॉर एल्स, तो इसके लिए मैंने दो टेस्ट केसेस दी थी। एक पॉजिटिव टेस्ट जिसमें ये वाला आया था, एक निगेटिव टेस्ट जिसमें ये वाला कवर। तो अगर इसमें एल्स पार्ट होता बाय द वे, तो फिर मेरे को वैसा दोनों देनी पड़ती थी, मतलब एक वो वैल्यू जिसमें इंडस्ट्री है, तो दूसरी वो वैल्यू जिसमें इंडस्ट्री नहीं है। बट यहाँ पे वैसा नहीं है, बिकॉज ऑल सब में इफ ही स्टेटमेंट था, तो ये लाइक हमने इसको ऐसा किया। चलो, ऑलराइट, सो ये हो गया, ये हो गया आपके इसके लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एंड विल ट्राई टू create a test case for this one as well. So the second method over here is handle before delete. Now what you can do is like you can have this inside in this code as well, आप इसमें भी कर सकते हो, या फिर दूसरा फॉर्म जो होता है वो ये होता है कि आप एक दूसरा टेस्ट मेथड बनाओ। इफ यू वांटेड टू सेग्रीगेट एवरीथिंग, यू वांटेड टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल, और वैसे भी आपको पता है कि टेस्ट क्लास तो वैसे ही बिजनेस अपना गवर्नर लिमिट में काउंट नहीं होने वाली है। तो अगर बाय द वे यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी कोड बना भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो गवर्नर लिमिट में काउंट होती ही नहीं है। 1 लाख लाइन्स ऑफ द कोड एंड 60 लाख लाइन्स ऑफ द कैरेक्टर, ये आपकी गवर्नर लिमिट। लेकिन टेस्ट क्लास उसमें काउंट होती ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा ऑप्टिमाइज करके दिखाओ, और रादर इट वुड बी लाइक कि आप इसको जितना अलग अलग करके रिप्रेजेंट करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जितना इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे, आपको समझने में आसानी है, किसी और को समझने में आसानी है ना। तो कोड की रीडेबिलिटी आप यहाँ बिंदास बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये तो वैसे भी गवर्नर लिमिट में काउंट होना नहीं है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक दूसरा टेस्ट मेथड क्रिएट करता हूँ, और हम उसको नाम देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर, ये जो हमारी दूसरी मेथड है उसके लिए। ठीक है, दूसरी जो मेथड है, चलिए। तो अब इस मेथड को इन्वोक करेंगे सबसे पहले, एज वी आर डूइंग दिस राइट, जैसा हम कर रहे हैं, सो वी वुड बी इन्वोकिंग दैट मेथड। तो हम उसे इन्वोक करेंगे हैंडल बिफोर डिलीट को इन द सेम वे लाइक वी हैव इन्वोक दिस। So I'm going to copy the name of class. Name of class. See, this is the very first step. Always this is going to be the very first step. ठीक है? Dot this method, right? This method. So I would be invoking this method. Now this method, if you can see, would have all these parameters. इसको ना दो तीन पैरामीटर्स हैं, ठीक है? इसको दो तीन पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है, इसका दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर है लिस्ट कलेक्शन, दूसरा पैरामीटर है मैप कलेक्शन, है ना। तो अब उसको कैसे करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है जैसे आपको बताया मैंने, लिस्ट ऑफ अकाउंट, यहाँ पर लिस्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा मैप कलेक्शन है, दूसरा मैप कलेक्शन है। ठीक है, तो बिल्कुल वही तरीका है, इसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं है। इट वुड बी लाइक new map collection. And how you define a map collection? Map collection have two things, key and value. So id comma account, id comma account, and then make this as a default constructor, make this as a default constructor. All right, now this, even between this you can have a segregation, आप चाहें तो इसको भी segregate कर सकते हो दो हिस्सों, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब लॉजिक ऐसा बनाओ कि ये समझ में आए कि हाँ इसके लिए लिखा हुआ है ना, इसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है। ओके, नाउ अब ये बनाने के बाद में द फर्स्ट लॉजिक इज चेकिंग, द फर्स्ट लॉजिक इज चेकिंग लाइक अगर कोई रिकॉर्ड है जिसका एक्टिव स्टेटस यस है, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू डिलीट इट, अगर आप उसको डिलीट करने की कोशिश करते हो, है ना, अगर इफ यू आर अटेम्प्टिंग टू डिलीट दैट, बिकॉज ये जो हमारा ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो कब कॉल हो रहा है, वो कॉल हो रहा है आपका बिफोर डिलीट। कोई अगर डिलीट कर रहा है ना तब, तो ये दोनों जो है ये दोनों तभी काम कर रहे हैं हमारे, हालांकि सो बिफोर अगर डिलीट है, और बिफोर अगर डिलीट है तो अगर वो एक्टिव है तो हमको एक एरर थ्रो करना है ना, एरर थ्रो करना है। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक है। अब इसी को मैं यहाँ पे रेप्लिकेट करता हूँ। तो एक रिकॉर्ड है जो कि एक्टिव रिकॉर्ड है अकाउंट का, उसको अगर डिलीट कर रहे हैं, उसको अगर डिलीट कर रहे हैं तो आपका वो वाला पर्टिकुलर पोर्शन कॉल। तो अगर आप डिलीट भी कर रहे हो तो भी आपको रिकॉर्ड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड क्रिएट करना ही है। तो मैंने ये यहाँ पर एक टेस्ट रिकॉर्ड बनाया, उसको इंसर्ट किया। अच्छा, इंसर्ट किया मतलब ये डायरेक्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट पे नहीं गया, ये रेप्लिकेट हो रहा है अंदर में। पहले एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, क्या इंसर्ट हुआ, एसीसी, जिसमें ये सारी डिटेल्स हैं।
ठीक है, जिसका एक्टिव स्टेटस, इंपॉर्टेंटली जिसका एक्टिव स्टेटस एसीसी डॉट एक्टिव इक्वल्स टू यस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो बताएगा आपको कि वो रिकॉर्ड जो है वो एक एक्टिव रिकॉर्ड है। ठीक है, एसीसी डॉट एक्टिव इक्वल्स टू यस। ये सही ट्रू और फॉल्स है, क्या होता है? एक्टिव यस और नो होता है ना, आई गेस। वन सेकेंड, ट्रू फॉल्स तो नहीं है कहीं, मुझे देखने दो। पिक लिस्ट है, बुलियन नहीं है। पिक लिस्ट है तो फिर यस और नो ही होगा, बुलियन होता तो ट्रू और फॉल्स होता था। सो इट इज यस और नो, यस। कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। हाँ। सो मतलब एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया और उसका एक्टिव स्टेटस क्या है? यस है। ये वैल्यूज नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हो, बिकॉज ये इस बिजनेस लॉजिक को बिलोंग नहीं करती। आप चाहे तो हटा दो, आप चाहे तो रखना है तो रख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज ये रिकॉर्ड है जिसका एक्टिव स्टेटस यस है, उसको हमने इंसर्ट किया। एंड नाउ आफ्टर इंसर्शन डिलीट है। अब आप उसको डिलीट कर रहे हो, एंड आफ्टर इंसर्शन यू आर डिलीटिंग दैट। तो अब जब आप उसको डिलीट कर रहे हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिलीट दैट, तब आपका ये वाला ट्रिगर, ठीक है, बिफोर बिफोर डिलीट, और बिफोर डिलीट में ये वाला पोर्शन कॉल, ठीक है। जब आप डिलीट कर रहे हो उसको, तब आपका ये वाला पोर्शन कॉल होगा। ये पोर्शन कॉल होगा तो ये जाएगा हैंडल बिफोर डिलीट पे। हैंडल बिफोर डिलीट पे जाने के बाद में इट वुड चेक फॉर द एक्टिव स्टेटस। अगर एक्टिव स्टेटस यस मिलता है तो ये एक एरर थ्रो करेगा। तो अब जब मैं इस क्लास को रन करूंगा तो इतना पोर्शन हमारा कवर हो जाएगा, वेरी ऑब्वियसली। ठीक है, तो लेट मी सेव दिस कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको मैं सेव करता हूँ, एंड आई ट्राई टू रन दिस कोड। आई वुड ट्राई टू रन दिस कोड। ठीक है, अब चलो कितना कवरेज मिल रहा है, कहाँ तक मिल रहा है? अकाउंट ट्रिगर 75% कवरेज है, और ट्रिगर हैंडलर 66%। ठीक है, ट्रिगर हैंडलर 66%। समथिंग, ट्रिगर कौन सा पावरफुल? वन सेकेंड, हाँ, लेट मी चेक इट आउट। ये क्यों नहीं कॉल? स्मॉल एस, स्मॉल वाई, मैंने कैपिटल वाई से रिप्लेस किया है, बिकॉज पिक लिस्ट है ये। पिक लिस्ट में एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं बॉस, और आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। लेट्स सी नाउ, अभी भी यही है। ओ, एक्टिव स्टेटस, एक्टिव स्टेटस इतना तो डिलीट नहीं होता ना सर, हाँ रिकॉर्ड। हाँ, नहीं होता तब तो ये होना चाहिए ना, ये वाला पोर्शन तभी तो, ये वाला पोर्शन तभी तो आता है जब एक्टिव रिकॉर्ड है उसको आप डिलीट कर रहे हो, क्यों ऐसा? और एक्टिव है, रिकॉर्ड का एक्टिव स्टेटस यस है, रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, दिस हैज टू बी कॉल, ये कॉल होना चाहिए। ACC account collection, if ACC dot active equals to yes.
This collections. This is null क्यों होता है? नल क्यों आ रहा है? ठीक है, मुझे डीबग करना पड़ेगा ऐसा लगता है। ऑलराइट गाइस, आई विल कंटिन्यू दिस बिकॉज मुझे इसको डीबग करना पड़ेगा कि ये नल क्यों आ रहा है यहाँ पे। वी आर नॉट गेटिंग द वैल्यू ऑफ अकाउंट ओवर हियर। अकाउंट की वैल्यू नहीं मिल रही है इसको, जबकि वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। इंसर्ट के बाद आई एम अटेम्प्टिंग डिलीट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टिल इसको नल मिल रहा है। नल मिलने की वजह से यहाँ पे ये स्टेटमेंट कॉल ही नहीं हो रही, उसको अकाउंट का रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। अकाउंट इज न्यू अकाउंट, सब तो ठीक है यहाँ पे। ठीक है, गिव मी सम टाइम फॉर दिस। इसको मैं डीबग करता हूँ कि अकाउंट की वैल्यू क्यों नल जा रही है। ऑलराइट, आई विल सी टू दिस, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं इसके ऊपर में। यार ये प्रोग्राम आज हो जाता तो अच्छा रहता था। मीनवाइल यू कैन एटलीस्ट ट्राई विद दिस कोड। आप इतना ट्राई करके देखो, और ये और इसके आगे का फिर जो है मैं पहले इसको डीबग करता हूँ, उसके बाद में देखता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टॉप इट बाय टुडे। टुमारो क्लास नहीं रहेगी, कल मॉर्निंग में छुट्टी रहेगा आपको। मंडे विल कंटिन्यू।